आज हम पहले दो आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, which is the belief in oneness of Allah and the belief in angels. We're going to cover these two articles of faith. So article 1 is the belief in oneness of Allah. Believe that Allah is the creator, the sustainer, the cherisher, and the sovereign. एक बात before starting articles of faith. Whenever you're writing your answers in Islamiyat, it's not just a comprehensive subject. You need proper vocabulary, need a proper grammar, and you need a proper style in writing your answers as well. Not just writing a creator, but अगर आप words use करते हैं sustainer, cherisher, sovereign, ये भी उन्हीं British वालों ने ही लिखे हैं ऐसे words, and they want us to write that as well. He is the Lord of the immensely vast universe. He is one and unique. His nature is too sublime for human minds to perceive, and none are comparable to him. The perfection of the universe proclaim his oneness, and Allah is eternal, without beginning or end, and the absolute, who is not limited by time. No one has the right to be worshipped except Allah, and he has the divine knowledge. His mercy and grace are unbounded, and he is the Almighty and the All-Wise. He is omnipotent, omnipresent, omniscient, eternal, absolute. He is one. Omni matlab one. He is the lawgiver and single-handedly administers the whole universe. यहाँ पे हमारे पास एक रेफरेंस आता है, इट इज अल्लाह बिसाइड्स whom none has the right to be worshipped, मतलब अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पूजना. द क्रिएटर, द इन्वेंटर ऑफ ऑल थिंग्स, द बिस्टरर ऑफ ऑल फॉर्म्स, किसी और की इबादत नहीं सिवाय अल्लाह की. ही इज अल्लाह द वन, द इटर्नल, द एब्सोल्यूट, एवर लिविंग. ठीक है, इटर्नल, एवर लिविंग, हमेशा रहने वाला. ही बिगेट्स नॉर इज बिगॉटन, एंड देयर इज नो वन कंपेरेबल टू हिम. सूरह इखलास में कहते हैं. Now, what are the three types of Tawheed? Tawheed Rububiyyah, it is the belief in Allah's lordship and authority. फिर Tawheed al-Asma Sifat, which is in belief in Allah's names and attributes. And then we have Tawheed Ulayya. It is the belief that acts of all worship are for Allah alone. Then what is Shirk? Shirk is the opposite of Tawheed, comparing or associating someone else than Allah, associating partner with Allah that can be comparable to Allah, and it is an unpardonable sin. इस गुनाह की कोई माफी नहीं है. Allah forgives not that partners should be set up with him, but he forgives anything else whom he pleases. To set up partners with Allah is to devise a sin, the most heinous indeed. And there are three types of shirk. जैसे कि number one, shirk in Allah's lordship and in his existence, shirk in Allah's names and attributes, and shirk in the worship of Allah as well. और यही फिर आपके पास एक कुफर के अंदर आती है, शिरक असगर के अंदर आती है. माइनर शिरक आता है कि जस्ट डूइंग सम एक्ट्स ऑफ अल्लाह टू शो ऑफ, वो वाले एक्ट्स करना कि मेरे पास सारी पावर है, ये वो वाला शिरक है. ठीक है. Then we have shirk khafi, which is an inconspicuous shirk, that is the dissatisfaction with Allah, Allah से नाराजगी, and that something has happened. ठीक है, उस वक्त you're not thinking it would have been better if such and such and such happened. ये ना सोचना कि हम तो हमेशा ही कहते हैं ना इसमें अल्लाह की बेहतरी होगी, अल्लाह में बेहतरी. जो लोग ये नहीं सोचते, वो भी एक तरह से शिरक है. Then what are the effects of Tawheed and Muslims life? ओपन माइंडेडनेस, सेल्फ एस्टीम, मॉडेस्टी है हमारे अंदर, एक मॉडेस्टी की क्वालिटी है. हम्बल है, वर्चुअस है, अपराइट है, ऑप्टिमिस्टिक है कि जो होगा बेहतर होगा, अल्लाह बेहतर चाहता है. डिटर्मिनेशन, प्रिजर्वेंस, bravery, peace and contentment, and obeys Allah's law and commands. So now we'll discuss the article number 2, which is the belief in angels. We know that all angels are created by Allah, and Arabs believed angels were the daughter of God, which is not true. They are made of light, they praise Allah, they perform all the duties that Allah has assigned to them, and they cannot commit a sin. वो गुनाह नहीं कर सकते, and they don't have any free will. Obviously, they follow Allah, they obey Allah. They cannot reproduce, and only Allah knows their number. They are given powers by Allah. They are usually invisible. They come in graves after the death. जब आपकी death हो जाए तब भी वो कब्र में आते हैं. And they keep the record of our deeds. कौन deeds का वो note करते हैं? What do we call them? Can you tell me जो हमारी deeds record कर रहे हैं? नहीं सर. Noble writers. Noble writers पढ़ा था ना? किरामन कातबीन कौन है वो? ठीक है, अच्छे और बुरे deeds जो लिखते हैं. इसका एक रेफरेंस है. एंड द एंजल्स सेलिब्रेट द प्रेजेस ऑफ देयर लॉर्ड एंड प्रे फॉर फॉरगिवनेस फॉर बीइंग्स ऑन द अर्थ. अब याद आ गया, क्लियर है कौन थे एंजल्स? कोई और एंजल्स बताएं चले मुझे, प्रोमिनेंट. पढ़ा हुआ हमने ये एंजल्स वाला पहले भी एक और बुक से. टेल मी सम नेम्स ऑफ द एंजल्स एंड देयर ड्यूटीज. सर हजरत जिब्राइल द आर्चएंजल, हजरत मिकाइल द celestial angel, हाँ. फिर सर there is the angel of death.
हजरत एंजल ऑफ डेथ कौन? तीन याद है बस, लिखवाते हैं, अभी लिखवाता हूँ. So one of the prominent angels are Hazrat Jibreel, who is the archangel, brought the messages of Allah and the books and still comes on the earth. Chief angel. He also brought the news of Hazrat Isa to Hazrat Maryam, और इनका टाइटल रूह का है. रेफरेंस, इन इट descends angels and रूह with the permission of their Lord. सूरह अल कदर के अंदर रेफरेंस है इसका. Then we have Hazrat Israfil. To announce the day of judgment, कहते हैं ये अपना एक ट्रम्पेट ब्लो करेंगे जो कि पूरी क़यामत ले आएगा. And he is there to announce the resurrection, the time of the day of judgment, कि किस दिन क़यामत आएगी. Hazrat Israel, the angel of death, responsible for taking the souls out of the body at the time of death. Hazrat Mikael, जैसे आपने कहा, celestial bodies की controller है, responsible for the needs such as rainfall. He has also control over the planets, the galaxies, and he has helpers who assist them by the command of his Lord. They direct the winds and the clouds as well. Clouds और winds भी कौन चला रहे हैं? As Allah's will. किरामन कातबीन कौन है? नोबल राइटर्स. किरामन कातबीन, राइटिंग डाउन योर डीड्स, दे विल नो ऑल यू डू. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है इन एंजल्स. दे विल नो ऑल ऑफ यू डू. राइट आर डीड्स ऑन योर शोल्डर. फिर हमारे पास मुनकर और नकीर है, विच विल क्वेश्चन अस इन द ग्रेव. जब डेथ हो जाएगी वो क्वेश्चंस ग्रेव में आके पूछेंगे. देन वी हैव मालिक, द लीडर ऑफ द 9 गार्ड्स ऑफ हेल. ठीक है, शैतान. रिजवान, इन चार्ज ऑफ द पैराडाइज. याद हो गए? क्लियर है? याद रहेंगे? जी सर.